साल पूरा भारत 8वां आयुर्वेद दिवस मना रहा है। इस आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और नेशनल आयुष मिशन, गोवा काउंसिल, CCRS, इन सारों लोगों ने मिलकर आयुर्वेद की उपयोगिता बढ़ाने के लिए और जन स्वास्थ्य जन आंदोलन के लिए एक रैली आयोजित की है, जिसमें 300 से ज़्यादा लोग सहभागी हुए हैं। और ये सारा काम आयुर्वेद का उपयोग जन स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। Every year we get one theme on which we work. All together, National Ayush Mission. This year we have got our council with us, our All India Institute of Ayurveda with us, and CCRS with us. So all together for last 7 years, we used to simply celebrate it with lectures and some practicals. This year we decided that we will go for reaching to people. It is Jana Swasthya is this our year, our motto, and so we want to go to the door of people that our Ayurveda is here to serve you. Always prevention is better than cure. So we want to reach to people to prevent the diseases and take their life better level. हांव डॉक्टर स्नेहा भागवत, गोवा काउंसिल ऑफ आयुर्वेदिक एंड इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन. आज आमी हांगा आयुर्वेद दिवस ह्या निमित्तान एक रॅली घडोवन हाडल्या. ताचे भितर आसा ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद, नॅशनल आयुर्वेद मिशन, गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, तशेंच गोवा कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च आणि आमचे गोमंतक आयुर्वेद महाविद्यालय हाच्या सगळ्यांच्या जोड पावलान आमचे बरोबर CCRS आसा, जी नॅशनल बॉडी आसा. आज आयुर्वेद दिवस हो फक्त भारतानच न्हय तर 100 देशांनी सेलिब्रेट केलो वता. आणि हो करत आसतना आमकां इतलेंच दिसता की आयुर्वेद हो प्रत्येक घरान, प्रत्येक जनसामान्या कडेन वचचो, जेणे करून स्वास्थ्य रक्षण आणि आतुरस्य विकार प्रशमन म्हणजे आयुर्वेदाचे मोटो आसा तो प्रत्येक घराघरान पावचो. तशेंच जशें प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर, प्रिवेंशन इज बेटर अँड चीपर ऑल्सो दॅन क्युअर, हें बी प्रत्येकाक समजून घेवपाक जाय. आणि ताजे खातीर आयुर्वेद हो सगळ्यात योग्य मार्ग आसा, जातून दिनचर्या, ऋतुचर्या, तातून आमचे स्वास्थ्याचें रक्षण कशें करप आणि ताजे बरोबरूच विकार प्रशमन म्हणजे डिजीज जाल्यानंतर सुद्धा आयुर्वेदान अशे खुबश्यो गोष्टी उपलब्ध आसा जेणे करून आमकां आमच्या स्वास्थ्याचें रक्षण, मूळ रोगापासून मुक्ती करून स्वास्थ्याचें रक्षण करू शकता. आज National Ayurveda Day is being celebrated all over India today. It's a very auspicious occasion. On this occasion, this year theme is Ayurveda for farmers, Ayurveda for students, and Ayurveda for general public. Under this theme, the Government of India has launched various activities like the conducting of the farming technique awareness program to the farmers, distribution of medicinal plants, and taking up of various activities for the welfare of the farmers. Similarly, for the students, the activities were like arranging so many competitions with the theme of Ayurveda. Then for the general public, we have conducted a lot of camps. The medical camps have been organized to create awareness. So with all these aspects, the public should be made more aware about utilization of or implementation of Ayurveda principles for health. Thank you.